This program is powered by MLBD Research and Resource Foundation, initiated by Motilal Banarsidass Publishing House and Good Weather. नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस स्पेशल प्रोग्राम स्पेशल एंटरप्राइज सीकिंग द एनलाइटनमेंट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वार्तिक टीवी का ये स्पेशल फीचर है जो हमारी भारतीय सनातनी ज्ञान परंपरा को, ज्ञान वांग्मय की हमारी धारा को आपके समक्ष लेकर आती है और हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, उनको समझने समझाने का ये जो यज्ञ है ये आपके समक्ष चल रहा है अनवरत रूप से। और इस यज्ञ में, इस ज्ञान सत्र के इस यज्ञ में आहुति देने के लिए हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हैं नई दिल्ली से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU के सीनियर प्रोफेसर रामनाथ जी झा, जो कि इंडिक संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज सेंटर के सीनियर प्रोफेसर हैं। और साथ ही हमारे साथ होंगी ऋषिकेश से आचार्य राधा जी, जो कि स्वयं हमारे शास्त्र परंपरा की अध्येता हैं और जापानी स्टूडेंट्स को गीता उपनिषद का अध्ययन अध्यापन कराती हैं। आजकल उनकी एक पुस्तक भी चर्चा में है और गीता उपनिषद के ऊपर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, इसलिए आचार्य राधा जी अब ऑथर भी हैं। इसी तरह हमारे साथ रहेंगे मुंबई से टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर एडिटर रहे हुए और ख्यातनाम एमिनेंट कॉलमनिस्ट श्रीमान विठल जी नाडकर्नी, भारतीय मूल के मशहूर वैज्ञानिक एमिनेंट साइंटिस्ट, इन दिनों अमेरिका रहने वाले प्रोफेसर बलराम सिंह जी, और साथ ही अमेरिका से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं, USA से ही ज्वाइन कर रहे हैं भारतीय मूल के प्रख्यात प्राध्यापक एमिनेंट प्रोफेसर अनिल जी भाटे। और साथ ही बेंगलुरु से हमारे साथ होंगे प्रोफेसर श्रीराम जी दरभा। हमारे एमिनेंट पैनलिस्ट के पास चलें, हमारे इन गेस्ट को आपके समक्ष लेकर आए, उनका वेलकम कहें। इसके पहले आज का जो हमारा एपिसोड है, इसकी एक भावभूमि आपके समक्ष रखना चाहते हैं। भारतीय सनातनी ज्ञान परंपरा को हम गीता उपनिषद के जरिए, गीता उपनिषद के माध्यम से समझने समझाने का ये क्रम चलाए हुए हैं। और इस क्रम में आज गीता उपनिषद के चैप्टर 8 अध्याय 8 के श्लोकास 20 to 24, श्लोक संख्या 20 से 24 तक का विवेचन होने वाला है। और आज का जो एपिसोड है वो भारतीय हमारी जो सनातनी दर्शन परंपरा का एक आप सार तत्व समझ सकते हैं। एक बहुत ही विलक्षण जो हमारी दर्शन परंपरा का ही एकमात्र विशेष आकर्षण है, वो आज आपको देखने को मिलेगा। हमारे दर्शन परंपरा में ही एकमात्र हमारी ही परंपरा है जिसमें परम धाम की, परम गति की बात की जाती है, सनातन यानी इटरनल लोक की बात की जाती है, अबोध की बात की जाती है, जहां से जन्म जन्मांतर का कोई चक्कर रह नहीं जाता है। प्राणी जब एक बार वहां पहुंच जाता है, परम धाम में पहुंच जाता है, तो उसके बाद मृत्यु लोक में या कि विभिन्न जन्म जन्मांतरों में, विभिन्न योनियों में आना से उसकी मुक्ति हो जाती है, छुट्टी मिल जाती है, उसको सदैव के लिए छुट्टी मिल जाती है। अन्यथा बाकी दर्शन परंपराओं में हेवनली या जन्नत वगैरह के जो जहां हैं, वहां का मसला ये नहीं है कि आना या बंद हो जाएगा, ये नहीं। यहां ये है, यहां एक और बात है हमारी दर्शन परंपरा में कि अन्य जो लोकालोक हैं वहां यदि पहुंच जाता है प्राणी जीव, तो वहां से आना जाना उसका लगा रहेगा। वो काल की उस लिमिट में है, इटरनल नहीं है। इटरनल इस धाम को किस तरह से प्राप्त किया जाए, आज का एपिसोड इसीलिए खास एपिसोड माना जाता है। आप देखिएगा, आज विवेचित होने वाले जो श्लोक हैं, इनकी तरफ हमारा इशारा है। ये खास श्लोक हैं, इसलिए हैं कि आज भगवान इस हमारी दर्शन परंपरा का रहस्य बताने वाले हैं। और जिस तरह से सनातन गति को प्राप्त व्यक्ति पहुंचता है, क्या वो गति है, किस तरह से पहुंचा जाए, ये सब आज, और सनातन गति है क्या आखिर, ये भी आज भगवान बताने वाले हैं। और
ये जो आवागमन का जो चक्कर है, इससे मुक्ति कैसे मिले, ये भी आज, जिसके लिए कि गीता पढ़ाई जाती है, ये आज समझ में आने वाली बात है। और परम गति को प्राप्त होकर उस अव्यक्त परमात्मा के धाम में गति कैसे पाई जाए, ये आज कुंजी मिलने वाली है। इसलिए ये अत्यंत दुर्लभ मामला माना जाता है और इस अत्यंत दुर्लभ प्रक्रिया को ही आज के इन श्लोकों में लिया गया है। और आज के एपिसोड की हमारी विषय वस्तु ये है। आज ये भी पता चल सकेगा कि इस यात्रा में कौन कौन से मार्ग हैं, यानी कि डेस्टिनेशन पड़ाव जिसको हम कहते हैं, उसके बीच में कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन से हाईवेज हैं, उनकी क्या पहचान है, उनके क्या लक्षण है, ये भी अब आज के इन श्लोकों के बाद से शुरू हो जाएगा। इसलिए आज का एपिसोड बहुत विलक्षण है। और आज के एपिसोड में और क्या कुछ है, ये आज हम समझेंगे हमारे विद्वज्जनों से। सो नाउ विदाउट अ फर्दर ड्यू, वी वुड लाइक टू वेलकम आवर एस्टीम्ड पैनलिस्ट्स। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर रामनाथ जी झा, आचार्य राधा जी, विठल जी नाडकर्णी, प्रोफेसर बलराम सिंह जी, श्रीराम जी दरभा और अनिल जी, प्रोफेसर अनिल जी भाटे। आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मोस्ट वेलकम। तो प्रोग्राम की शुरुआत करें इससे पहले हमारे प्रोग्राम की जिस तरह से रवायत है, ट्रेडिशन है, परंपरा है, आज विवेचित होने वाले जो श्लोक हैं चैप्टर 8 के अध्याय 8 के श्लोकास 20 to 24, श्लोक संख्या 20 से 24 का पहले रिसाइटल होगा। इसके बाद प्रोग्राम की हम औपचारिक शुरुआत कराएंगे। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। तो प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और प्रोफेसर झा साहब के पास चलते हैं। झा साहब स्वागत है, नमस्कार जी। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और आपने पहले बहुत अच्छी भूमिका रख दी है। और पिछले जो श्लोक में हमने चर्चा की थी कि अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा, जो दो प्रकार के प्रलय की हमने चर्चा की थी कि एक खंड प्रलय और एक महाप्रलय। तो जो ब्रह्मा या प्रजापति है उनका जो दिन है वो हमारे लिए सृष्टि काल होता है और उनकी जो रात है वो हमारे लिए प्रलय काल होता है। लेकिन ब्रह्मा इत्यादि का भी लय होता है जिस परम कारण में, वो महाप्रलय है। भगवान इसी चीज का संकेत करते हुए कह रहे हैं कि ये जो अव्यक्त शब्द जो है, अव्यक्त का दो बार प्रयोग हुआ है। एक अव्यक्त जो है वो प्रजापति इत्यादि के लिए है, जो भी अतीन्द्रिय है, उनको इंद्रिय से नहीं जाना जा सकता। लेकिन जो अव्यक्त परम ब्रह्म है, वह अव्यक्त जो है वो इस अव्यक्त से पृथक है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि परस्तस्मात्तु भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। जो सनातन अव्यक्त है, वह जो पर ब्रह्म है, वह पर ब्रह्म जो अव्यक्त रूप है, इंद्रिय से परे है, किसी भी जो उपकरण हमारे शरीर में है उससे परे है, वह इस अव्यक्त से भी पृथक है और इससे परे है। यह इसका भी कारण है।
अव्यक्त का मतलब प्रजापति, और प्रजापति से जो अभिव्यक्त भूतक ग्राम इत्यादि जो सृष्टि है, उसका जो मूल कारण है वह इस अव्यक्त से पृथक अव्यक्त है। जो अव्यक्त परब्रह्म इन सब के लीन हो जाने पर भी, नष्ट शब्द लीन के अर्थ में ही लेना चाहिए, तो इन सब के लीन हो जाने पर भी जो सत्ता बची रहती है वह परब्रह्म है, जो अव्यक्त रूप से भी जाना जाता है, लेकिन प्रजापति इत्यादि अव्यक्त से पृथक है। और वही वस्तुतः अव्यक्त अक्षर है, जिस बार बार परब्रह्म की चर्चा हम करते आए हैं। और इसमें भी 7 प्रश्नों में जो एक प्रश्न है कि वह क्या है, तो वह परम तत्व जो है वही जो है वह परम गति है, उसी को प्राप्त करना हम सबका लक्ष्य है। और जो भी व्यक्ति इसको प्राप्त कर लेता है तो वही परम गति जो है वो कहते हैं मेरा स्थान है। मेरा स्थान में यहाँ पार्थक्य नहीं है, यहाँ धाम जो है वो कोई विष्णु पद कहते हैं, कोई और शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन विष्णु शब्द भी विश्व व्यापने धातु से बना है, और विष्णु शब्द का अर्थ वहां परम तत्व है जो सर्वव्यापक सत्ता है। उस स्थिति को जो प्राप्त कर लेता है वह फिर इस जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, यानी अभिव्यक्ति और लय का जो चक्र है, इस चक्र से बाहर हो जाता है, क्योंकि फिर वह सब कुछ हो जाता है। जो सब कुछ हो जाता है फिर उसको वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो इस दृष्टि से ऐसा जो परम तत्व है वह पराभक्ति, जो अनन्य भक्ति है, उस भक्ति से भी उसको प्राप्त किया जाता है, और जिसके अंदर ये सृष्टि है। जैसे पुरुष सूक्त ऋग्वेद में आया है कि पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम देवी पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम। तो जो वो पुरुष तत्व है, पुरुष के भी 2 अर्थ बताते हैं शास्त्र में सामान्य रूप से। एक तो पूर्णात पुरुष, जो सबको व्याप्त करके स्थित है वह पुरुष है, और दूसरा पूरी शरीरे शेते इति पुरुष, जो हमारे शरीर में जो चेतना निवास करती है, जो चैतन्य तत्व है, वह पुरुष है। तो ऐसा जो पुरुष है वह उसके अंदर ही सृष्टि है। हमारे शास्त्र में कहीं भी सृष्टि को पुरुष से बाहर नहीं माना है, उसी के अंदर ये सृष्टि होती है। अंदर में ही जो प्रजापति इत्यादि के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है, फिर उसी में लीन होता रहता है, और इस तरह से सृष्टि परंपरा चलती है। और इसीलिए मीमांसा ने इसको जगत को भी नित्य माना है, क्योंकि या तो ये कार्य रूप में रहता है या कारण रूप में रहता है, लेकिन रहता अवश्य है। तो इसलिए चूंकि पुरुष परब्रह्म के अंदर ही ये सृष्टि है, इसीलिए यह सृष्टि जो है उसमें वो व्याप्त है, वह कण कण में व्याप्त है, उससे वह पृथक नहीं है। तो इस दृष्टि से हम कहते हैं कि कण कण में ईश्वर है, और इसीलिए हम प्रकृति के सभी तत्वों की पूजा करते हैं, क्योंकि मूल रूप में वही तत्व उसमें विद्यमान है। दूसरा एक विषय जो है, जो जन्म और मृत्यु की बात करती है, या पुनर्जन्म की बात जो हमारे ट्रेडिशन में है, कि योगी किस समय वो शरीर त्याग करते हैं जिससे कि उनका पुनर्जन्म होता है, या फिर योगी में ही एक दूसरे कोटि के योगी हैं, वह किस समय अपने शरीर को त्याग करते हैं जिससे वो पुनर्जन्म उनका नहीं होता, फिर से वह सृष्टि चक्र में नहीं आते। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए भगवान कहते हैं कि मैं उस समय को बताता हूं, और वो समय जो है अंतिम श्लोक में, कि जो योगी निष्काम भाव से और उस पर ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर जाते हैं, वह योगी अपने शरीर को, जिसमें कि अग्नि देवता की प्रधानता होती है, जिसमें ज्योति की प्रधानता होती है, जो दिन का समय होता है, जो शुक्ल पक्ष होता है, और जो उत्तरायण है, मूल रूप से इसमें सूर्य की प्रधानता है,
क्योंकि सूर्य की जो रश्मि है वह जीवन का प्रतीक है, और सूर्य जो है वह भी उस परम तत्व के प्रतीक के रूप में माना जाता है। तो उस रश्मि के मार्ग से जब वो जाते हैं तो फिर वो दोबारा उनका जन्म नहीं होता। तो एक पक्ष ये है कि ऐसे ब्रह्मविद जो है वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करते, और बाकी आगे जो है जो कर्म फल को ध्यान में रखते हुए, जैसे इष्ट पूर्त दत्त इत्यादि शास्त्र में चर्चा आती है, तो जो तालाब खुदवाते हैं, जो दान पुण्य करते हैं लेकिन सकाम भाव से करते हैं, तो वो भी योगी हैं। लेकिन ऐसे योगी जो हैं वह फिर चंद्र मार्ग से, फिर उसका आगे वर्णन है जो हम आगे करेंगे, तो उसके आधार पे वो जाते हैं, लेकिन उनका पुनर्जन्म होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसमें शरीर त्याग कर देंगे तो ये हो जाएगा। योगी उसमें शरीर त्याग करते हैं। जो योगी ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वह इसमें, इस अवधि में शरीर त्याग करते हैं, और जो कर्म बंधन में है वह फिर दूसरे मार्ग में, चंद्र मार्ग में अपना शरीर त्याग करते हैं। तो इस प्रकार का भगवान ने बड़ा स्पष्ट रूप से जो योगी किस प्रकार शरीर त्याग करते हैं और कैसे वो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, इसका पूर्ण विवेचन किया है। तो अगले चक्र में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो प्रोफेसर बलराम सिंह साहब से एक बार मुखातिब हो लेते हैं। आपको एड्रेस है, स्वागत है आपका, नमस्कार। सुन पा रहे हैं क्या? बिल्कुल सुन पा रहे हैं। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, थोड़ी मध्यम आ रही है लेकिन आ रही है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अभी कंफर्टेबल हैं या आपकी फ्लाइट में कितना टाइम है? आवाज नहीं आ रही है, एक बार थोड़ा लाउडली बोलिए तो। आवाज आ रही है हमारी? बहुत डिम है, मतलब एक तरह से। वो तो समस्या बनी रहेगी। जो भी आवाज आ रही है अभी तो मैं अभी बोल दूं, नहीं तो बाद में बोल दूं। अभी आवाज नहीं आ रही है, इसका मतलब बाद में बुलवाएंगे आपसे। वैसे भी आज आप जाबालीपुरम में हैं, इसलिए आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। जबलपुर में है आज प्रोफेसर साहब, एयरपोर्ट पर विराजमान है। तो देखते हैं बाद में जब आवाज ठीक हो जाएगी तब लेते हैं। जी आचार्य जी स्वागत है, नमस्कार। Hariom. हरिओम। Okay, I'm going to start with a little bit of a hilarious thing. अभी शर्मा जी ने बात की कि हम लोग एक हमारा ही शास्त्र है जिसमें ये बताया जाता है कि पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा, या हम वापस आएंगे नहीं आएंगे। तो एक छोटा सा वाक्यांश है ऋषिकेश का ही। तो हमारे यहाँ पर एक बहुत चर्चित वाक्यांश है ये, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अभी। क्या होता है कि एक दिन एक बहुत ही प्रसिद्ध साधु महाराज थे जो प्रवचन देते थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो पहुंच जाते हैं स्वर्ग में। वहां जाकर के देखते हैं कि अरे इतना बड़ा आलीशान उनको बंगला मिलता है, और उसमें जो है 7-8 अप्सराएं बैठी होती हैं। इतना बड़ा बंगला है, दिन रात का खाने पीने का व्यवस्था की हुई है, मनोरंजन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बोले अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया जगह है, मैं तो स्वर्ग में पहुंच गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। बोले कि कुछ दिन हो जाते हैं उनको वहां पर रहते हुए। तो बोले बहुत दिन हो गए, जरा मैं देखूं कि मेरे पड़ोस में ये कौन है, तो मेरे बंगले से भी बड़ा बंगला है किसी का, देख के आता हूँ, हो सकता है कि काफी बड़े महापुरुष हो, जरा जाकर के दर्शन करते हैं। तो वो वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि इतना उनसे भी डबल साइज का बंगला, अप्सराएं भी ज्यादा, सुविधाएं भी ज्यादा। तो बोले ये है कौन, जरा देखूं मैं ये कौन है। तो वो जाकर के देखते हैं तो वहां पर जो आराम से बैठे होते हैं वो वहां पर ऋषिकेश में ऑटो ड्राइवर। तो ऑटो ड्राइवर की जब डेथ हो जाती है तो उनको उस स्वर्ग में बड़ा बंगला मिलता है। तो बड़ी हैरानी से वो जाकर के चित्रगुप्त के पास जाकर के कहते हैं कि आपने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ की है, कि ये कैसे हो गया। मैं तो पढ़ाता जा रहा हूँ, मैं अध्यात्म का ज्ञान दे रहा हूँ, और वो ऑटो ड्राइवर ऑटो चलाता है, आपने उसको मुझसे बड़ा बंगला दे दिया, ज्यादा अप्सराएं दे दी, ऐसा कैसे हो गया। तो वो बोले कि देखो बात सुनो, जब तुम पढ़ाते हो ना तो तुमसे पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं वो या तो सो रहे होते हैं या कुछ और कर रहे होते हैं, फोन बातें कर रहे होते हैं, उनका ध्यान कहीं और होता है। कोई सास बहू से लड़ करके आती है, किसी का अपने बिजनेस में जाना होता है, ध्यान तो उनका वहां पर होता नहीं है।
इसलिए क्या है कि तुम्हें जो है यहाँ तक हम लेकर तो आ गए हैं, लेकिन उसने ऑटो ड्राइवर ने तुमसे ज्यादा पुण्य किए हैं। लेकिन वो कैसे कि जब वो ऑटो चला करके जाता था वो इतनी तेज जाता था कि रोड में जो लोग खड़े होते थे ना वो बहुत तेजी से दिल से चिल्लाते थे, हे राम, हे प्रभु हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो उनके जो कहने की वो चैंटिंग करते थे और भगवान के नाम ये तो गलत चला जाएगा मामला। उसकी वजह से जो है उसको ज्यादा सुविधाएं मिल रही है। अब तुम्हारे कार्य करने से तो जो है सब लोग सो गए, किसी ने नाम नहीं लिया। अरे आप हमारा ट्रैफिक खराब कराओगे इंडिया का, क्या कर रहे हो आप? तो ये बड़ा एक प्रसिद्ध हमारे ऋषिकेश में ना वाक्यांश चलता है, तो मैंने ऋषिकेश तक ही रखना इसको, आप वहाँ ऑटो कम है। नहीं, बड़ी तेज चलाते हैं ऑटो वाले। तो नाउ आई विल टेक द 20th हम verse। समझ गए आपका इशारा। छोटे जो कस्बे होते हैं वहां ये प्रॉब्लम भी होती है और ऑटोज हैं भी वहां ज्यादा। आजकल मेट्रो सिटी में तो ऑटोज बचे भी नहीं है, और जो हैं वो भी वो तेज दौड़ने वाले रह नहीं गए अब, क्योंकि वो ग्रीन एनर्जी वाले जो आ गए हैं वो अब उस तरह से नहीं है। इसलिए उनको चिंता ना करनी है, आपके जो विद्वान जो हैं उनको चिंता नहीं करनी है। आजकल उस तरह के ऑटो रिक्शा चालक नहीं मिलेंगे। नहीं, ऋषिकेश में तो अभी भी है वो 10-10 लोग हम कहेंगे भाई ऋषिकेश वालों की सुनवाई अलग से हो ऊपर अलग से कराते। जी। Okay, now I'll start with the 20th verse. इसमें पहले स्टार्ट होते तू से। तू here is to show difference between the lokas and ईश्वरा। फिर अभी अव्यक्तात् जो है वो ब्रह्मा जी की सटल बॉडी के बारे में हम बता रहे हैं। अब दो तरीके होते हैं ब्रह्मा जी की सटल बॉडी को देखने के ना। वन इज द बेसिक बॉडी एंड द अदर वर्ड्स इज अबाउट ईश्वरा। सो व्हाट वी टॉक अबाउट कॉन्शियसनेस। सो हियर ईश्वरा, यहाँ जो इस वर्ड्स में हम बात करें दैट इज अबाउट ईश्वरा। एंड ईश्वरा इज ऑल्सो कॉल्ड परहा हियर। परहा मीन्स दैट द वन हु इज बियॉन्ड बर्थ्स एंड डेथ्स। और उनको सनातन भी बोला जा रहा है, दैट मीन्स इटर्नल। So everything that starts from Ishvara and will remain in Ishvara and will get destroyed in Ishvara because he is the supreme. Now destruction किसका नहीं होता है? That destruction will not happen to the one who is already a Brahmavid. That we will see in the next verse. 21st verse में भगवान has used words. अब 7th verse में भगवान used the word Mam. अब now in this verse he is using different words like Aksharam Brahman, अधियज्ञा, माम, परम पुरुषम दिव्यम, कविम पुराणम, अनुशासितम, माम अव्यक्ता एंड सनातनः। Now this is for his form without the attributes, यानी कि जिसको हम निर्गुण बोलते हैं, निर्विकार। This is the final destination of a human being, and after this a jiva doesn't come back. Bhagwan through this verse also explained the sagun upasaka and the nirgun upasaka. जिस तरीके से सब लोग भूखे हैं लेकिन अलग अलग व्यंजन खाने से सबकी तृप्ति, भूख की तृप्ति एक ही तरीके से होती है, despite of variety of food that a person, human being has, but the contentment that he gains after eating the food is same. Similarly, the saguna bhakti, the ones who do the bhakti looking at Brahman's saguna with the gunas, and the ones who do it without gunas gain the same path. They gain the same mukti no matter what. All gain the same. All lokas including Brahma lokas are पुनरावर्ती, means कि जितने भी लोकों से अगर लोकों पर कोई भी पहुंचता है तो उसकी पुनरावृत्ति होगी, वो वापस आएगा, चाहे वो ब्रह्मलोक की क्यों ना हो, क्योंकि ब्रह्मलोक में भी जो है ब्रह्मा जी के साथ में वो पहले उसके at the time of mass destruction is going to go away, and at the time of mass creation is again going to come back. 22nd verse talks about the oneness and the eternity of Bhagwan. It talks about जैसे gold jewelry के अंदर हम देखते हैं that gold is same in different parts of jewelry. We look at jewelry as ring or as a necklace or as a bangle, but the essence of the jewelry is same. Or when we look at different drinks, for example a cold drink or a tea or a coffee or a green tea, तो हम उसको देखते तो अलग अलग है, but the essence of that is water itself. So everything is that we are making as different drinks has emerged from water and gets dissolved into water. So the same way everything merges from Ishvara and gets immersed into that Ishvara. Purusha sa paraha. And this is what is called when you realize that Ishvara as the material and maker of this universe.
अब यहाँ पर एक और वर्ड आता है, इंटरेस्टिंग वर्ड, विच इज कॉल्ड अनन्य भक्ति. That is where, by seeing that the samsara exists because of Bhagwan only. When you see that Bhagwan is the material and maker of this universe, and this samsara is there because Bhagwan is there. Without Bhagwan, there cannot be any samsara. Then you start doing your karmas, anything like eating, sleeping, whatever, earning, towards Ishvara, because you realize that he is the material and maker of this entire universe. The 23rd verse, I'm going to talk about, like previously in the 15th verse, I talked about the karma mukti and the satya mukti. In this word, I'm going to talk about anavritti. This word is used for people who have the knowledge of the self, and they return back the knowledge of the self, but do not return back to any loka. And this is, we are talking about the conscious people here who live in the light and move on the path of anavritti. Then there is another word used here, avritti. Avritti is meant for people who live in for pleasure of the samsara. They live in for pleasure seeking. Unka jo goal hai, that is only to live, earn, party, make friends with people, accumulate things. And then they keep changing different bodies because of their desires and the result of their karmas. Cha eva is words mein use karte hain for those who have interest in Ishvara. But unfortunately, because they have a lot of lust and desires for something or someone in particular, then they become very restless at the time of death. And then they gain heaven and they come back. The 24th verse we are talking about Agni. Agni means fire. Fire or voice. Voice here means taking Bhagwan's name, chanting, or doing different satsanga, like that. When we are talking about voice used towards Bhagwan. Jyoti means light, to visualize Bhagwan. Now, Aha here means to become stable in light of Atma. अब शुक्ला का यहाँ पर यूज होता है. शुक्ला मीन्स टू renounce all lust. अब आपने renounce कर दिया all lust, यानी कि when we look at the sequence here, fire means you're using your voice for Ishvara. Then Jyoti means you're visualizing Ishvara. Then Aha means you are being stable in Atma. And then the next word is Shukla, means that you renounce all the lust towards samsara. तो अब क्या बचता है आपके पास? You gain Uttarayanan, which means that you reach above everything and everyone. Then Tatra Parayat Gachanti means by chanting, gaining vision of Bhagwan, one gains a pure inner self, and then he becomes a Brahmavid, which means that he gains the knowledge of Brahman. This verse explains the departure of people who have done punya karmas. Now Shukla Paksha is for 15 days and is the day of our ancestors. Krishna Paksha is the night of our ancestors. Now during Shukla Paksha, the light of sun is widespread and sun moves towards the east. Then it is called Uttarayana. This is for 6 months and the days become longer. People who leave their bodies at that time, they are in the charge of the fire deity. सबसे पहले उनको अग्नि देवता संभालते हैं. From fire deity, he hands him over to other different devatas. दूसरे देवताज आकर के उस बॉडी के इंचार्ज हो जाते हैं, उस आत्मा के इंचार्ज हो जाते हैं. Then he is handed over to the deities of Uttarayana. उत्तरायणा के जो deities हैं वो उनके इंचार्ज हो जाते हैं. After that Atma is handed over to the deities of Brahma Loka. वो उनको ब्रह्म लोका में ले जाते हैं. There he gains either a कर्म मुक्ति और a पुनरावृत्ति. या तो फिर ब्रह्मा जी उनको सिखाएंगे, दोबारा से ज्ञानम देंगे, उससे उनको जो है कर्म मुक्ति मिल जाएगी, या फिर उनको पुनरावृत्ति मिल जाएगी. नाउ पुनरावृत्ति में यानी कि वो दोबारा से प्रलय के टाइम पर चले जाएंगे और दोबारा से क्रिएशन के टाइम पर वो वापस आ जाएंगे. दिस वर्स इज ओनली फॉर people who are worshipping Lord Brahma as Saguna Lord Brahma. Why? Because Brahmachnanis जो है, they are already have a Sadhya Mukti. उनको तो मुक्ति मिल चुकी है. So they are not looking for any lokas, or they are not even looking for Lord Brahma's giving them Jnanam there in Brahma Loka. They are only looking for Jnanam here itself. These are the Brahmachnanis who live a conscious life, and here itself they gain a mukti. They do not have to go anywhere else for gaining any other knowledge, and this is the same knowledge which is departed here and also by Lord Brahma. I'll hand it over here to you, Sharma ji. Right. ठीक बात है. तो
नाटकर्णी साहब स्वागत है, नमस्कार। Namaskar, namaskar. As our learned friends have already explained so lucidly, the 20th verse of the Gita reveals a marvelous secret of a super transcendental dimension. This is said to lie beyond the so-called manifest and unmanifest, avyakta and vyakta levels of creation. So this must be not only subtle, but also eternal or ever enduring. Such a realm or such a level does not cease to exist even when all others do in that great dissolution of the worlds that we refer to as pralaya. By definition, therefore, the unmanifested, this super level is imperishable. Hence, it has been named Paramagatim in these verses, or the supreme state. Naturally, he or she who attains it does not return to the otherwise unceasing cycle of deaths and renewals of bodies, which are being changed like clothes or costumes one after another in that fashion show which Sant Kabir vividly refers to as Jag Darshan Ka Mela. In commenting on this particular verse in his Bhavartha Deepika, Sri Namdev Maharaj says, do not be surprised if your mind or reason cannot find or get a measure of this imperishable eternal. That is because just because it takes form does not mean it has lost its formlessness, nor does it lose its eternity when it loses its formlessness according to nature. This is exactly what modern neuroscience seems to have stumbled upon in recent times. The three most radical discoveries our scientists have made are that, first, the mind is inherently embodied. That means, body se hi wo aata hai. Secondly, thought is mostly unconscious. And lastly, abstract concepts are largely metaphorical. Now, this shift in our understanding of the nature of embodied reason has consequences of vast proportions for philosophy. Since the mind is inherently embodied, reason that arises from the body does not easily transcend the body. The so-called universal aspects of reason that philosophers like Kant and others discuss are what we perceive arising out of the commonality or the universality of our brains and environments that we all share and inhabit. There is therefore a notion in the Western science that there is no absolute freedom or full autonomy as long as we are alive and embodied. Modern science, interestingly, also talks about a mathematical basis to this inherent limits to reason. This was discovered by the great German mathematician Kurt Gödel in the earlier part of the 20th century. Working with formal logic, he proved what is known as the incompleteness theorems, which say that we can use axioms to prove the truth or falsity in a system, but the truth or falsity of the axioms themselves can never be proved with the same rules. During an interview with the Nobel laureate Roger Penrose, I once asked the great cosmologist if Gödel's work signified an end of mathematics as we know it. He disagreed. Perhaps truth with a capital T lies outside the systems, forever beyond axioms. This is when I remembered these beautiful verses from the Gita. Beyond proof, beyond change, beyond decay, beyond what we call the kshati or the kshara states in Sanskrit. Incidentally, Gödel, who was a Jewish scientist, had to flee Nazi Germany during World War II, and he was warmly welcomed in America at the Institute of Advanced Study at Princeton by none other than the father of relativity theory, Albert Einstein. In praising Gödel's work, it might be interesting for us to know Einstein said that when the history of mathematics is written by our descendants, Gödel will get a page and the rest of us
will all be relegated to footnotes. But what is very interesting, Godel himself believed in time travel and was a keen supporter of concepts such as rebirth and ghosts. So, coming back to the verse 22, the Lord describes this imperishable eternity as supreme, something beyond relativity. Purushasya sa parapartha, the Lord proclaims. And how does one attain or rise to that state? Simply by singular devotion. For the Supreme sleeps within the embodied temporary abode of ours, what Sri Nyandev Maharaj ji calls Dehapuri. But that does not mean we should despise or scorn or shame the body. Because if the inner Chaitanya is Purusha, the body is the ever faithful Prakriti. This is what philosophers and linguists like George Lakoff and Mark Johnson have talked about in path-breaking books with titles such as Philosophy in the Flesh and its Challenge to Western Thought. In the 23rd verse, the Lord describes the time in which the departing yogis can escape rebirths altogether versus that time of departure, which inevitably results in a recurring cycle of rebirths. The importance of these two paths in the yogic tradition cannot be overemphasized, and I must confess I found proof of it in the 1000-verse Hatha Yoga Pradipika of Yogi Svatvarama. All other versions of this visionary text stop at the Kaivalya Pada or the Samadhi. But this is the only text which is housed in the Jodhpur Royal Library, which has an extremely intriguing chapter on the secrets of how to decipher your dreams and how yogis can use them to calculate the time of demise and the methods of remission or foreshortening of one's life. Coming to our own times, the modern or read predominantly Western ideas of soul are both thus similar and also quite different from the map of the soul drawn by the Lord in the 8th chapter. I shall wait for my Right. deeper exposition of this in the second turn. Thank you so much. Okay. तो अनिल जी भाटे साहब के पास चलते हैं एक बार. प्रोफेसर भाटे साहब का हमेशा ये कहना रहता है कि मेरा नंबर जब तक आता है, जब तक सब कुछ हो जाता है, सब कुछ कह दिया जाता है. तो आज थोड़ा सा एक रिवर्स करते हैं इसको. जी भाटे साहब, स्वागत है. नमस्कार. 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 ये अभी भी हो गया कि सब कुछ already everything has already been said, so I have a very everything little... has been said by God himself. Yes, हम तो हमारे विजडम के हिसाब से ही तो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं ना. वो तो कह चुके, जो कहना था वो कह चुके. No, but the discussion that has been happening so far is so good that I have only 2 points to make here briefly, and as usual I could give the rest of my time to BALRAM Singh ji because he has a lot ये to दोस्ती, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? The first point I would like, to mention is that because I practice Kashmir Shaivism, you see, I would like to link this entire discussion of Bhagavad Gita to Kashmir Shaivism. So in Kashmir Shaivism, we talk about Shiva. You see, everything is Shiva. The Vyakta is Shiva. Avyakta is also Shiva. And what is beyond both Vyakta and Avyakta is also Shiva. So all these three are already included in this verse in the Bhagavad Gita. So Vyakta, Avyakta and beyond, both Vyakta and Avyakta. So manifest, unmanifest and beyond both of these, manifest and unmanifest. And that is Shiva, or we have to reach up to that third, the one which is beyond everything, the aspect of Shiva which is beyond both manifest and unmanifest.
and that is being pointed out here. Also, Nadkarni ji spoke it very, very eloquently and very well. However, I would like to point out that whether it is Roger Penrose or whether it is Gödel or whoever, none of these people had any idea of the third aspect, which is beyond uh, manifest and unmanifest. In fact, Bhagavad Gita and Upanishads are the only places where we have a direct pointing out of this third aspect. You see, Vyakta is all technology deals with Vyakta. And it is assumed that there is an avyakta, concepts like energy, etc., which are there, which are responsible for everything, but which are not directly manifest. Energy cannot be directly manifested. What we observe are effects of energy, etc. So that is avyakta. So both vyakta and avyakta are included in science and logic and philosophy, Western philosophy, that's what I mean, etc. But what is beyond the manifest and unmanifest, the entire body of Western knowledge has no idea at all about this third, which is beyond everything, the beyond manifest and unmanifest. And so, our Vedic philosophy, and especially Bhagavad Gita as the summary of Vedic philosophy, is the only place where we find a mention of this third aspect, which is beyond manifest and unmanifest both. So whether it is Roger Penrose or whether it is Gödel, I don't think, or whether it is Hegel, I don't think any one of them had any idea of this third aspect. So this is what I wanted to point out. Thank you. तो एक बार प्रोफेसर बलराम सिंह साहब के पास में ट्राई करते हैं क्या? शर्मा जी, I just want to just make a very brief interjection. एक मिनट इंटरजेक्शन का नेक्स्ट राउंड में इंटरजेक्शन है, तो एक बार एक राउंड करा लेते हैं, उसके बाद खोल देंगे इसको। आवाज हाँ, अब तो आ गई, अब आ गई सर आपकी आवाज हमारी। अरे क्या बात है। So I have all the things that nobody has said, so I don't have any problem that Professor Bhate has. हाँ, ये आपकी दोस्ती के लिए एक गाना याद आ रहा है, ये अभी हो सकता है नाडकर्णी साहब गा भी दें। ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का ये सिलसिला पुराना है। जी, ये तो भट्टे साहब बताएंगे। उनके जब वो कुंडली के जागने में जाते हैं तो हमने उनसे कई सवाल पूछे हैं, अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है, तो देखेंगे आगे चल के क्या होता है। लेकिन इस जो विषय मैं मिस कर गया हूँ, लकीली फॉर्चुनेटली फॉर मी that I read all those and I listened to some of you, whatever you spoke, but I'm going to confine myself to today's slokas. तो मुझे ये जो बात मैंने पहले भी कही है कि we have to remember that this is a dialogue that is happening to explain information or knowledge to someone who does not know but is quite accomplished otherwise, who does not know these things, because Arjuna need to know this, but he is otherwise very well accomplished person. So this is very important to remember, because the person who is being told all this is aware of certain things but not all of these things. Number two, he is a human being and about things beyond this world, and that also is happening in the middle of life and death situation. That really is the beginning of this chapter. It's like when you're dying, what you feel at the moment of death, what you remember, whatever you want, your desires are at that point, is that what happens. And it is important. I think I tried to make this point, but my voice was not coming very clear, that even today, the court accepts the dying death declaration. Most of the countries, they still accept.
dying declaration, which is because the person point knows is not attached at the end of it. He or she knows that it is end, and then that knows that there is no attachment. It's almost like a yogi. At the time of death, everybody becomes a yogi, whether you have practiced or not. Those who have practiced, of course, they have much better vision as far as the truth is concerned, and their truth is much larger than an ordinary person's truth. So I think that's where the difference is. Number three, this world the way we are seeing now, भगवान कृष्ण जिस तरह से हमको explain कर रहे हैं इसको, the way we are seeing is कि there is the world or the universe which is beyond Vyakta and Abhyakta. That's really a very good indication and very good clue that comes. जैसे अभी हम आपको उदाहरण के तौर से बताते हैं कि I appear and disappear. My voice also appears and disappears, as you could see it. But that was not me, actually. That was just my voice online. I am a person who already exists. But as far as the audience is concerned, or some of you wonderful people on this panel are concerned, my voice wasn't there, or I wasn't there. But that didn't mean that I wasn't there. I existed, already existed, but it's just I appeared and disappeared. This is a very good example that also seen in physics. If we take quantum, the quantum also actually talks about appearance and disappearance. And the way they are looking for it, physical evidence of it, they are not finding it. They have quantum tunneling effect, they have entanglement, and they are running around all those things because they are not accepting this basic framework in which things just appear and disappear. Mathematically, those are like sine waves. We do make, I do spectroscopy, a lot of work in spectroscopy, and we measure the signals. Those are just the waves. We are measuring the waves when they are on the side, when we are detecting them, they show up. But then for a period of time, depending on the wavelength and the frequency, they disappear. It just happens all the time. So this is very important observation that we are human, yet being told, and we are. I am not exactly in life and death situation, but I think if I were, I would understand it better. And the real idea that of this has been described elsewhere also in Nasadiya Suk. Professor Jha, I'm sure, is aware of it. There is the idea of spandan, that there was desire on the part of the Supreme, and that desire starts from spandan or oscillations. The Jain people talk about their scholars and sages talk about that to be as a karma. That is the karma that they think is all that is the vibration. In Vedas, it's called oscillations, but the ultimate results is the same. So you have that happening in Vedas, written like that. In modern science, we can see. In our life, we can see. So then when we talk about, I think it will be much better for us to understand if we take this point. Now, Shankaracharya talked about Brahm Sat Jagan Mithya. We talked a little bit about Mithya, I think, in one of the episodes, that we have Sat, Asat, and Myth or Mithya. Sat is something that is Sanatan, that is talked about here also. Asat is something that is not true anytime. But Mithya is in the middle, which is where the science comes. The Mithya is that is dependent on time and space. So this description is exactly of the reality in time and space, which is in the Mithya world, which means the Maya. It is the Maya that is explaining or is visible to us. And that then explains not everything has been said as yet. I think there are four more slokas to go to talk about, but the basic idea of day and night. It's day and night is disappearance. But he goes into a more complication. I do that, I'm sure Professor Jha and others also do. When we try to make a point, we bring in more heavier evidence and heavier examples to show that this is what happens. So he not only talks about day and night, but he also talks about Krishna Paksh and Sukla Paksh. He also talks about Uttarayan and Dakshinayan. I believe, I mean, it may be
something that I'm very interested to explore it further in terms of biology and biochemistry and molecular biology to see whether whether there are differences. I look into if something is already known. I know that between day and night, our physiology changes. During different weather seasons, our physiology changes. Whether our physiology changes between Uttarayan and Dakshinayan, it also may be the biology is affected. But this is all, even if it changes, it just only shows to us that you need to look at it. And we are all part of Maya anyway. So that is the crux of it. And when we say that this is all Maya, well, of course, there has to be the truth is already there. The truth is that this is the representation. Like my picture is a representation of me. It's not me. Although it appears to be exactly me, and I'm talking, and it reflects what I am. But it's like copy. It's not real. And one last point I want to say about this sun. I think somebody mentioned about this. I think Professor Jha was talking about the sun is the it. It's finally this is source of our life and everything. But even that is just only brought about here is just to prove to us that well, look, without sun you cannot live. Sun is the one which has day and night. Sun is the one which is affecting the moon, and sun is the one which is going with Uttarayan and Dakshinayan. So it's like completely he put every evidence. But you and I, and especially in India, people know that sun is just one system. There are thousands and billions of suns in this galaxy, and that they, at least in our calendar, we talk about nakshatras. Nakshatras are very important, where sun is something that is used, but nakshatras are the ones which are used to tell about our yug cycle and other kind of things that is very well known. But I think the point here that is being made is just to explain to us the Maya. And then he says that to really understand this, they can go beyond Maya, which means they can go Vyakta and Avyakta is just the Maya. But if you do understand that, and that you do have that full realization at the time of your departure, then you know where you're going. And that's what I think is happening here, which is quite different, Professor Bhate, than everybody else has said so far. राइट। तो चलते हैं प्रोफेसर श्रीराम जी दरभा साहब के पास में। दरभा साहब स्वागत है, नमस्कार। Namaskar. Hari Om. हरि ओम। In the modern times of technological advancement and a skeptical mind, doubting Thomases all over, and looking for empirical evidence in everything that we perceive, it becomes important that we need to understand and then implement and also share with the people to be able to explain to them. And there are different kind of technologies and then the knowledge available in the world. One is, of course, one side the Sanatan, that is all our G's starting with Gu. One is Gita Gyan, the other is Guru Gyan, and for rest of it there is Google Gyan. So there are three Gus. So even if in the times that we are living, that we look for all kind of queries and questions. Earlier people used to study and then ask the Guru. Now we ask Google. And Google has provided, the life has been made very, very easy. And for everything there seems to be an answer. And there are several apps, we call them apps. So there is something called Google Maps also. In these 4 or 5 slokas, or maybe 6 slokas of this chapter, the God, I think he is such an omniscient and a knowledgeable supreme consciousness. He has preempted these kind of times will come in the future in Kali Yuga, and these kind of skeptical minds looking for empirical evidence would be there in order to convincingly present to them also his own Swarupa, and also the Swarupa is the destination. And in earlier episodes and chapters we discussed, and also in all the management literature, especially in the human side of it, we discuss about how the importance of the destination as well as the journey, the process is as important as the purpose and the goal. So with the examples of throughout the Bhagavad Gita and Upanishads, it is always given with the examples, drishtantas.
and excellent examples in the form of stories and then in the form of dialogues. It is given. Particularly in this place, Bhagavan has given for a Google map kind of a users also his location. It is important for us to, if we have to start our journey and take the journey and reach a destination, we need to have all the implements. The application is important. I repeat the word application. The app. Application has got two meanings. You have to apply. If you have the knowledge that is not sufficient, you need to download the application and you have to use it. So that means you have to first open the app, the Google Maps, and then you have to type where do you want to go without giving your destination. Where do you want to go? That map itself will not take you. So let us say I'll have to go from a place of a point A to point B. You type it, and then the rest of it is Google takes care of it. So at least you should know where do you want to go, and for that you need to have clarity about the destination. The destination here is the Paramam Gatim, the Paramatma, the omnipresence. That's what he is talking about. And you have to use, and there are several ways depending upon the traffic that you choose. In a Google map also gives you from time to time, first it will give you one kind of a route, and then it also gives you directions and steps how to take that route and then go in. At every point of time it is prompting you, and accordingly you self drive, and then you have to drive. It will not take you and then drop you at the destination. So you have to do the sadhana, and then you have to follow the map meticulously, and it suddenly it gives a detour. It gives you two. If you go through this route, it will take some 29 minutes. If you go through this route, it will take 42 minutes because of the traffic, or maybe some julus, yeah, jo bhi hai, these obstacles are there. That is how I think here also, when he has given the Akshara Parabrahma, the destination, his own location, is also given map, and then two ways, three ways of reaching it. One is the Uttara, that is the one which liberates. In the etymological, both figuratively, literally, if you take it also. And then others have talked about, so there's no point in repeating it. The Shukla Paksha is basically, or the Uttara is about that which liberates. When we talk about in our daily language also, up north and down south, like that we say that which takes you up, and then that which takes you down. And Uttara is also that which liberates, and Dakshina is Daksha, that which is binds you. So it is a choice which is given to you, and what happens if you take which marga. And here when he is talking about Kala, Kala doesn't also mean just a point of time. It also means in Sanskrit the path. The Kala ka matlab marg bhi hota hai. So he is given 2-3 marg. One is the Uttara marga, Sukla marga or Uttarayan. The other is the Dakshinayan and Krishna. Uttara is the bright. That's how Shukla is bright. And Krishna is always darker, and then the difficult, probably, that's how we can understand. And south. And having understood, of course, he has given what is. And in life also, if we see Sanatan Marga is also always solar, Surya oriented. And the Abrahamic or Islam, if you take their Chand ki Marg lete hain. I am just taking, one aside. So that is also another way of looking at it, जो हमसे डिफरेंट होते हैं, अलग लोग होते हैं, तो शायद वो लोग चांद की मार्ग लेते हैं या धूम्र मार्ग लेते हैं, which is very smoky and then a little darker and things like that, और रात में. And this is a brighter marg and easier marg, and the marg which doesn't have punaravrutti. There is no, once you reach a stage and a particular destination, there is no need for you to look back. Even in our management also, we should aim at a place where you don't have to look back. And then, अरे ये तो गलती नहीं किया है हमने, गलत रास्ता, the road not taken, Robert Frost. And at a philosophical level, even Western philosophers like Plato has always said that in the idea of Plato, there is a Platonic idea, everything is twice removed from the reality. That's what he says, any creation. Like, anything what we want to, first thing which happens is in the mind, in an abstract form. And after that, once we think about it, like the example I gave about the destination from going from one point to the other,
First, you need to know, like looking London and going Tokyo doesn't happen. You will have to see that, okay, यहाँ से यहाँ मैं जाना चाहता हूँ, तो that particular thing should be there either in your first in your mind, and then the map. Map is also some kind of a abstract thing. And afterwards, you will have to do the application sadhana, and then you have to go through each and every step meticulously. How is it possible? Through bhaktya, ananya bhaktya, and single-minded focus. While you are driving, you have to look at the front as well as the rear mirror and the sideways, and a phone call comes, wife or some other girlfriend or whoever co-passenger is talking to you. You have to manage, and then you have to do all sorts of multiple tasks while you are driving. We are living in that kind of a disturbed kind of a world. Then how is it, how difficult is it? Itna आसान नहीं है. So it is beautifully given in these 3, 4, 5, 6 Right. slokas. And which marga that you want to take is a matter of choice, whether you want to take a difficult and a no return marga where there is upanaravriti rahita, janma rahitya and moksha, or the other which is a devayana. The other one which you want to take is the pitruyana, or which is also a good marg only. See, he is not saying that the second one is a darker marg, you will go to hell. And the third marg is the most important, which is a nishiddha marg, which is avoidable, and then that you should not take. So the choice is always given. And when it comes to, I'll just finish in 10 seconds. When it comes to, okay, all that is fine, sir, empirical evidence is required, ये भगवान परमात्मा ये सब ठीक है, लेकिन दिखता नहीं है अभी कैसे. Now that way there are several things which do not appear, but we cannot deny. Like that, for that, a beautiful example is given in Chandogya, where Shvetaketu and Uddalaka, when they have a question, when he asks, he gives a Lavana Udaka example he gives. Like he asks Uddalaka, Shvetaketu, you just come and then put some salt into the water. And then, okay, salt is there in a solid form, and then he puts into the water, and then he stirs it up. And then it just dissolves into the water. Where is the salt? Salt was there earlier in a solid form, and now it is not there, but it is there. And just to taste the water, it says it is salty. Then where is the salt? So that's how it is a beautiful example given. So you cannot deny that there is no salt, but it is not visible, but the salt is there. Similarly, in order to get, we need to churn, it comes from the milk, and then you have to churn it, and you have to do your own sadhana to get to the actual ghee, to enjoy whatever you want to have with the ghee. So Right. ghee doesn't appear, but it outside in the milk. With these examples, we can understand, and we cannot नेक्स्ट राउंड में just बोल लीजिएगा, deny. आपका डिस्टर्ब हो गया है ये मामला, नेक्स्ट राउंड में बोल लीजिएगा. या एक फोन कॉल आ गया है. हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात Thank नहीं, नेक्स्ट राउंड में ले लेंगे. गोस्वामी के प्रकल्प के अंतर्गत गोरस का एक उत्पाद हमारे व्यूअर्स के लिए. एक बार पुनः आप सबका स्वागत है. और आज एक बात हम थोड़ा सा, अब ओपन राउंड है चूंकि उसमें जो भी बातें कर सकते हैं वो कर सकते हैं. तो अब आज जो है ये मुझे याद आया कि पीओजे के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर को भारत में किस तरह से विलय कराया जाए, इसके लिए आर्मी यानी मिलिट्रली कोई रास्ता है या क्या किया जाए, इसको लेकर ये हमारा ये जो कार्यक्रम है गीता उपनिषद का, ये शुरू हुआ था कि कल्चरली हम वहां किस तरह से पहुंचे और वो जो लोग हमारे फोल्ड से दूर हो गए थे उनको इस फोल्ड में वापस किस तरह से सनातनी परंपरा में हम हमारा दर्शन रखें. इसी का आइडिया डॉक्टर अमजद मिर्जा का था और बाद में ये प्रक्रिया आपके सामने आई है. अब आप देखिए भगवान की और ये जो महात्म्य है भगवत गीता का, इसको देखने का यदि थोड़ा सा भी कोई, वो आप कह रहे थे दरबार साहब की दिखता नहीं है, तो दिख रहा है ना पाकिस्तान में ईंट से ईंट बजने का कार्यक्रम शुरू हो गया है. अकेला पीओजे के ही नहीं, अब तो कई बातें और शुरू हो गई हैं. तो हमारा ये जो प्रयास चल रहा है ठीक दिशा में जा रहा है. तो एक तो बात हम ये कहना चाह रहे थे
और दूसरी बात ये कि आपने दो तीन बातें कही है। एक तो आपने गूगल बाबा का नाम लिया है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो है वो गुरु के पास नॉलेज मिल सकता है, गूगल के पास इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक बात। और ये जो नॉलेज जो शब्द है इसकी भी आप जरा वर्ड फॉर्मेशन देखिए, ये ज्ञान ही है असल में। जय और कै मिलते हैं तब ज्ञ बनता है, ये वही है, वो दूर नहीं है आपसे। वो तो अब ठीक है, गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर दो भाई, अब आजादी तो हमें मिल गई है, लेकिन वो कांग्रेस अभी भी चल रही है। तो किसी पर्पज के लिए ये जो मान लीजिए कुछ ग्रंथ लिख दिए गए हैं वहां, अब उन ग्रंथों से बाहर आ नहीं रहे लोग, जबकि अब क्रिटिकल माइंड की जरूरत है पूरे विश्व को, विज्ञान की जरूरत है। मॉडर्न साइंस जिसको हम कह रहे हैं वो बेसिकली साइंस है, और साइंस की जरूरत पड़ेगी। अब ये ऐसा नहीं है कि आप हमारी कमांडमेंट मान लो, जो हम कह रहे हैं वही सही है। अब हर चीज का एक वो जो आपने कहा एम्पिरिकल एविडेंस अब संसार मांगेगा, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो और चाहे वो इस्लाम हो, मांगे उठने लग गई है, एथियस्ट बनने लग गए हैं लोग। अब आप एक्स मुस्लिम की बात कर सकते हैं, एक्स क्रिश्चियंस की बात कर सकते हैं, या सनातन में आने वाले लोगों की बात कर सकते हैं। लोग पूछेंगे, और पूछेंगे तो जवाब सिर्फ और सिर्फ सनातन के पास में है, वहां उन बुक्स में नहीं है। तो ये एक बात हम यहां रखना चाह रहे थे। दूसरी बात आपने वो कहा कि वो भगवान ने अपना धाम का एड्रेस तो दे दिया है, बट वो एड्रेस तो प्रधानमंत्री के कार्यालय का भी है, अमेरिका के राष्ट्रपति का भी है, लेकिन एनएसजी और कमांडोज बैठे हुए हैं, तो उनसे किस तरह से पार पाई जाए, यही तो भगवान गीता में कह रहे हैं कि भाई एड्रेस तो मैं दे रहा हूं तुमको, लेकिन आओगे किस तरह से, ये जरा सोच लेना। एड्रेस पूरा दिया है उन्होंने, ये बात सच है। और हमारे यहां पर ग्रामीण अंचलों में या बल्कि शहरों में भी एक कल्चर का पार्ट है, व्यक्ति जब निधन होता है व्यक्ति का और अर्थी उठाई जाती है, तो उस अर्थी के साथ चलने वाले लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, और सत्य बोले गत्य है। यहां गति की बात की जाती है। आप देखिए जरा क्या दर्शना है, गति किसकी, कौन जा रहा है, यानी कोई जा रहा है, और वो जाएगा तो उसकी किस तरह की गति बनेगी, यानी गति का मतलब स्पीड क्या होगी उसकी। अब जितनी स्पीड से आपका वायुयान जाएगा उतनी स्पीड से आप जल्दी तय कर लेंगे। ये हमारे दर्शन की अब तक की चर्चा में जो मैं समझ पाया वो हमारे व्यूअर्स के लिए मैंने मेरे हिसाब से रखा है। जैसा आप स्वागत है, एक बार वापस से सेकंड राउंड है जी, और कोई इंटरजेक्शन चाहे तो वो भी कर लीजिएगा। जी बिल्कुल। और दो तीन बिंदुओं पे बात करना चाहता हूं। पहला तो जो शुक्ल मार्ग है और कृष्ण मार्ग है, तो प्रोफेसर सिंह जी जो बात कर रहे थे, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पूरी वैदिक परंपरा में जो सूर्य है उसको आत्मा कहा गया है, सूर्य आत्मा जगता, और वह चैतन्य का भी रूप माना गया है। तो मुझे जैसे लगता है कि सूर्य मार्ग जो है वह एक तरह से डायरेक्ट चैतन्य का मार्ग है। और जैसे प्रोफेसर सिंह कह रहे थे कि जो और भी स्टार्स हैं और भी है, तो चूंकि सूर्य की परिधि में हम सभी हैं, इसीलिए हमारी चेतना का सीधे संबंध सूर्य से है, और फिर सूर्य का गैलेक्सी का जो केंद्र है उस ज्योति से है, उस ज्योति का फिर ब्रह्मांड के ज्योति से है। तो ये एक डायरेक्ट मार्ग है। लेकिन जो चंद्रयान की चंद्र मार्ग की बात करते हैं, तो चंद्रमा का प्रकाश सूर्य पर निर्भर करता है, तो वो डायरेक्ट रियलाइजेशन का मार्ग नहीं हो सकता, वो इनडायरेक्ट रियलाइजेशन का ही मार्ग होता है। तो इस दृष्टि से हम देखें तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट लगती है। दूसरा जो एक मैं कहना चाहता था कि ये जो पूरा चैप्टर है उसमें अभी हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो 7वें प्रश्न का उत्तर है, और 7वें प्रश्न में जो कहा गया है कि प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्म भी, तो ये जो शुक्ल मार्ग या कृष्ण मार्ग की बात हो रही है, ये अभी यहाँ योगी के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, आम लोगों के कॉन्टेक्स्ट में नहीं हो रही है। या सीधे का नियत आत्म भी, जिस व्यक्ति ने तपस्या की है, योग मार्ग पे चला है, उसमें दो तरह के योगी हैं। एक योगी हैं जो अभी भी कर्म और उसके फल को ध्यान में रख करके वो तप में हैं, तो उनके लिए जब वो शरीर त्यागते हैं तो चंद्र मार्ग से त्यागते हैं। लेकिन जो योगी
अपने उस तप से जो उस परम तत्व को प्राप्त कर लिया है, ब्रह्मविद हो गए हैं, वो जब अपना शरीर त्याग करते हैं तो वह शुक्ल मार्ग से करते हैं, वह सूर्य मार्ग से करते हैं। तो योगियों की बात है, ये आम लोगों के शरीर त्याग की बात भगवान यहाँ नहीं कह रहे। पहली बात, जो एक विषय था कि जो मतलब ये दरभा, ये प्रोफेसर भाटे जी कह रहे थे। आज मैं बड़ा संतुष्ट हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि अंतिम श्लोक में भगवान ने स्पष्ट किया है कि वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, ये जो भी बातें कह रहे हैं ये वैदिक मार्ग की बात कह रहे हैं। काश्मीर सेविज्म बहुत अच्छी चीज है और वेद सबको इंक्लूड करके चलता है। वेद का जो दर्शन है उसमें सब इंक्लूडेड है, ऑल इंक्लूसिवनेस है। लेकिन काश्मीर सेविज्म आगम का मार्ग है, और आगम का मार्ग है, यदि उसको वेद के या उपनिषद में, जैसे आपने स्वयं ही कहा कि उपनिषद का दर्शन जो है वो सर्वोच्च है, तो यदि उस कॉन्टेक्स्ट में यदि काश्मीर सेविज्म है तब तो ठीक है। लेकिन यदि कहीं भी यदि डिफर करता है तो फिर ये भगवान साफ कह रहे हैं कि वेद की दृष्टि से जो आगे बढ़ता है, वेद के ज्ञान परंपरा में जो है, उस आधार पर ही ये शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग की बात चल रही है। काश्मीर सेविज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से शुक्ल मार्ग या कृष्ण मार्ग की बात नहीं चल रही है। तो ये मैं एक जो आदरणीय नाडकर्णी साहब कह रहे थे वेस्टर्न के बारे में, तो प्रोफेसर बलराम सिंह जी ने भी कही है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि और जो भी बात करें, लेकिन एडविन श्रोडिंगर ने उस कॉन्शियसनेस की बात की है, व्हाट इज लाइफ, जो उनकी पुस्तक है, कि कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज सिंगुलर, कॉन्शियसनेस इवन डजंट नो प्लुरैलिटी, प्लुरैलिटी इज नथिंग बट द मैनिफेस्टेशन और इफेक्ट्स ऑफ माया। तो इसीलिए सिंगुलैरिटी और वो कॉन्शियसनेस के कॉन्टेक्स्ट में जो अभी प्रोफेसर सिंह भी कह रहे थे कि व्यक्त और अव्यक्त की बात तो हम साइंस में करते हैं, लेकिन एडविन श्रोडिंगर ने उन दोनों से परे अव्यक्त जो परब्रह्म की बात करते हैं, जो शुद्ध चेतना और एक चेतना जिसमें ड्युअलिटी नहीं है, इसकी बात वो करते हैं भाषा में। ये मैं नहीं कह सकता कि वो ब्रह्मज्ञानी है, लेकिन भाषा में जरूर उन्होंने इस बात को कही है। तो मैं ये कुछ बातें रखना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। राइट जी, आचार्य जी। देखिए, I just want to share this that when we were in the ashram and we used to talk about gaining different worlds and different lokas and how to go through the Uttarayan process and all. So we were privileged enough that the ashram where we studied, their honorable prime minister was there, the great Rajnikant hero, he was there, TVS की owner शीला बालाजी, मतलब ये जो जितने भी names हैं, the who's and who's of India, they would come there and study under Swamiji. And Swamiji would, we were very close to him because we were the students, we were the resident students. तो हम लोग तो 3 साल उनके साथ में बहुत अच्छे से ग्रुपिंग में रहे। तो वो हमें एक ही बात बोलते थे, तुम लोग बच्चे, तुम लोग क्या समझते हो कि इनको प्रॉब्लम्स नहीं है, इनकी जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। So if you are thinking that you want to get back to another life, or you want to come back as a wealthier person or a very very famous person again back on this earth, or you think that you would come back as a very privileged person who will get all the necessities and comforts and luxuries, तो क्या उनको प्रॉब्लम नहीं होती है? Just come and sit and look at what problems these people are also facing. So if you keep nullifying your desires, that yes, I do not want to come back on this earth and I do not have any more desires to gain anything or to achieve anything, जो आपको कहीं जाना नहीं है, आपको कहीं पहुंचना नहीं है, आपको कुछ करना भी नहीं है. All you have to do is whatever you are doing every day, your goal has to be of Ishvara. So when your desires keep nullifying, जब आपकी धीरे धीरे आपकी सारी डिजायर्स खत्म हो जाती हैं कि मुझे संसार के अंदर आने का अब कोई
रास्ता नहीं चाहिए, I don't want to come back in any yoni, I don't want to come back as any person, then slowly you will get into the sadhya mukti ka path. तो क्या होगा कि जब आपके पास डिजायर्स ही नहीं है, बिकॉज डिजायर इज द सीड ऑफ योर पुनर्जन्म, तो पुनर्जन्म आपका तब होगा जब आपके पास वो डिजायर का सीड रह जाएगा. सो देन स्वामी जी वुड एक्सप्लेन दिस वेरी नाइसली. मोक्षा, नो मोक्षा, who is desiring, who is not desiring, that is you. So if you do not even have that desire of moksha, कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, why? Because then you are one with ईश्वर. भाई डिजायर तो वो करेगा ना. अगर आप मुझे यदि कोई मेरी इच्छा पूछे ना, मेरे इंडिविजुअल, कि मैं क्या बनना चाहूँ मतलब आफ्टर दिस, तो मैं ये चाहता हूँ कि भगवान के पास ये जो फरियादी जाते हैं ना, जो एप्लीकेशन लेकर, उनका निपटारा करने में मेरी कोई भूमिका हो जाए, बस इतना चाहता हूँ. जी के असिस्टेंट बन जाएंगे. हाँ, वही लगभग आप ये समझ लो कि यमराज जी, ना यमराज का काम तो फैसला देने का है. नहीं, यमराज के पास तो दूसरे लोग जाते हैं. हमारे पास जो लोग आएंगे वो दूसरे आएंगे. हमारे पास तो वो लोग आएंगे ना, जो ये आज जो जिक्र हो रहा है, कौन सा शुक्ल मार्ग है, ये जो मार्ग है, वो लोग आएंगे हमारे पास. यमराज जी के पास तो यमराज जी तो खुद अपने आप में ही ओमनी इम्पोर्टेंट है. वो तो फैसला खुद ही देते हैं. हम दूसरे मार्ग की बात कर रहे हैं. तो वहां पर तो छठे छठाए, इसमें इसका कारण है, मैं क्यों चाहता हूं कि वहां छठे छठाए जाएंगे. छठे छठाए का मतलब जो आचार्य जी ने कहा था ना, ज्ञानी पुरुष गए वहां, उन्होंने फिर अपनी अपील वापस से करी कि भाई क्या हो रहा है नाटक. तो वो अपील लेके जो लोग आएंगे, उनके में मेरी कोई भूमिका, एप्लीकेशन ले जाकर दे दूं उनको कि भाई देखो जरा इसको मैटर को जरा सल्टाओ. ये इतना ही करना है मेरे को, बस यही चाहता हूं मैं. तो ये बात है. No, my point is, I'll just complete. ये ओपन राउंड है और लाइटर नोट पे बात हो रही है. Yeah. No, the point is कि आप ये अगर देख रहे हैं कि आपको मुक्ति किस तरीके से चाहिए, और भगवान has given different paths of your मुक्ति. सही बात ये कह रहे हैं ना आप, ये आपके गुरुजी ये कह रहे थे कि कुछ मत चाहो. हाँ, तो मुक्ति किससे चाहिए, किसको चाहिए, किससे चाहिए, क्यों चाहिए? That's the question. When you're already मुक्ता here. एक बुजुर्ग आदमी मुझसे कहा करते थे, वो थोड़े से उनको फीलिंग होने लग गई थी कि अब वो जाएंगे, तो वो कई बार रुआंसे से हो जाते थे. मैंने कहा क्या बात क्या है आप इतने, बोले यार मुझे लगता है अब जाने का टाइम आ गया, लेकिन समस्या ये है कि वो मेरे को गाना याद आता है, मुसाफिर जाएगा कहाँ, ये छैया पाएगा कहाँ. मैंने कहा छैया हो सकता है वहां भी मिल जाए आपको, चिंता क्यों कर रहे हो इतनी. कई लोगों को दिमाग में चलता रहता है कुछ ना कुछ चक्कर, ये है. लेकिन इसमें एक ही बात है जो सच्ची बात है कि ज्यादा चक्कर में इसमें पड़ना नहीं और सोचना नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए. वो आप अपने काम करते जाइए. भगवान ने बताया ना कि काम करो अपना, तो काम जिससे हिसाब से, वो अभी दरबार साहब भी कह रहे थे कि भाई आपको पूरा मैनुअल मिला हुआ है, मैनुअल के हिसाब से चलते जाइए. वही संभव है, आपके गुरुजी भी कह रहे होंगे. हो गया? हाँ जी 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 जी. ओके, आगे बढ़ते हैं. नाडकर्णी साहब, एक तो कोई इंटरजेक्शन आप चाहते थे वो कर लीजिए, फिर दरबार साहब बात. हाँ, मैं आई जस्ट वांटेड टू से इन एज ए ऑलमोस्ट एज एन असाइड, to be fair to modern mathematicians or physicists like say Roger Penrose, Stephen Hawking, Kurt Gödel and Albert Einstein, they themselves have not made any claims to being spiritualists or seers. ये तो पहली बात है. As Bhate Saab and BALRAM Singh ji also has pointed out, they are doing science, they are doing their field work. It is people like, I won't say myself, but say people like Fridtjof Capra or others who are bringing in a tayo of physics or dancing woolly masters or ऐसे कुछ करके जुगाड़ कर रहे हैं. Of course, Einstein does get quoted when he says God does not play dice. But as a science editor or columnist, would I ask the master whether he met God like Prince Arjuna did on a battlefield of World War II? No, not really. Because, as I said in my earlier statement, Einstein was actually referring to probability, an idea which is central to quantum physics. Having said that, I'm not extending it to God or, transcendent worlds. If I have done it, I have just to say that these are powerful ideas which come in the domain of humanity. Now, having said that, I want to add that in our era,
pervaded as it is by monotheistic thoughts. Any discussion of the soul is likely to assume that it exists in a non-physical dimension with no tangible qualities. So far, so good. But when you add a crassly materialistic or a rabidly atheistic layer to that belief, we can end up in a very dark and desolate space indeed. This is without question. This is a place full of negative nihilism that one witnesses not only on the battlefield of Kurukshetra, but also in the conflicting or crumbling societies that we see in our post-COVID times. That is where is the relevance of this great Gitopanishad that we are talking about. To be fair to our Western brothers and sisters, though this concept of the formless impersonal was unknown to their early cultures, where the human soul was presumed to have a material, if somewhat evanescent or even numinous quality, and the body spirit supposedly survived a little after death, the Western theologians thought that it had a quasi-material existence and then eventually died or perished. It is this idea that has been circumvented by the concept of transmigration of souls that the Bhagavad Gita offers in the 8th chapter. ये जो transmigration का जो बात आती है, then the theory of karma उसमें आती है, but it does not bind you. आपकी बात पे झा साहब एक इंटरजेक्शन चाहते हैं, आप अपनी बात कंप्लीट भी कीजिएगा, कुछ बात पूछना चाहते हैं. हाँ, तो let me just complete this with this. So it doesn't mean that there is no way out, and that is the beauty of these verses. He says that there is a Shukla Paksha and there is a Krishna Paksha, and there are ways of going to that. And the techniques are also given to you of desirelessness or Nishkama Bhavana, whatever. So, unlike physics where things are likely to be compartmentalized and cut and dried, this is a realm of possibility and positivity is what I would like to submit. Thank you. Right. जा साहब कुछ इंटरजेक्शन चाहते हैं? जी जा साहब. बस मैं एक दो सेंटेंस में सिर्फ एक बात तो नाडकर्णी साहब ने कही कि जो वो प्रोबेबिलिटी की बात करते थे, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने इस पे पूरी पीएचडी कराई हुई है कि आइंस्टाइन एज ए डिटर्मिनिस्ट साइंटिस्ट. तो आइंस्टाइन कभी भी प्रोबेबिलिटी में बात नहीं करते थे. आइंस्टाइन बिल्कुल कॉज इफेक्ट की बात करते थे, और कभी भी वो वर्नर हाइजेनबर्ग के कभी भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से सहमत नहीं हुए. तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी की बात आइंस्टाइन में कभी नहीं रही. जी नहीं, he was denying probability. Yes, sure. फिर I agree. He was saying that probability he does not accept. He is not talking about God. आ गया ना वो. अब बातें आ गई तो चैप्टर क्लोज हो गया ना. लेकिन एक शब्द मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनको जब पूछा जाता था कि अल्टीमेट कॉज क्या है, तो एक वर्ड वो बोलते थे कि आपने जो कहा ना कि गॉड डजंट प्ले डाइस, तो इस पे वो कहते थे कि देयर इज समथिंग मिस्टीरियस प्लेयर. ये वर्ड यूज करते थे कि देयर इज समथिंग मिस्टीरियस प्लेयर, जिसको वो अल्टीमेट कॉज के रूप में मानते थे. जी यही दोनों बातें सही है. मिस्ट्री तो है ही है, जब तो गीता का ज्ञान हम आप विद्वत जनों से ले ही रहे हैं, और प्लेयर तो है. एब्सोल्युटली बिल्कुल करता भी कहते हैं. मैक्स प्लैंक रोते थे कि आइंस्टाइन हमारे लीडर होके भी हमें मजदर में ऐसे छोड़ दें करके. He does not accept probability. He does not accept quantum physics as it is envisaged, as a probabilistic science. And leading Germans, including Heisenberg and others, were disappointed that Einstein was not giving credibility to their Planck. Yeah, Planck, I am meaning pun intended, okay? ठीक है, दरबार साहब. Another interesting, word which I found in 22nd verse is the Asyanta Sthani Bhutani. We were Sharma ji, we were talking about the भगवान ने एड्रेस दे दिया है,
So, but it is only up to us to now follow the manual and then the Google map or whatever direction and then do sadhana and then reach. But he has gone further actually. This is not Shantastani Bhutani boss, everything is in him only. He is the destination, he is the address. वह कहाँ रहता है? So इसके लिए ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति. He has given another beautiful address, a precise address. कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं सर, जो क्या करते हैं, जब कॉलेज खुलती है, मान लीजिए उनका टाइम आया कि अब कॉलेज खुल गई है या स्कूल खुल गई है, तो वो अपने घर वालों से कहकर पूरी बुक्स ले आते हैं कि मेरा कोर्स पूरा दिला दीजिए आप, और वो कोर्स लाकर अपनी बिल्कुल वार्डरोब में सजा के रख लेते हैं उसको, तो टनाट एकदम, जिसको कहते हैं ना टनाटन, हमारी लोकल लैंग्वेज में ऐसा बिल्कुल बना लेते हैं उसको कि मेरी आ गई, सारी बुक्स आ गई. आप देखिए सारी साल उन बुक्स को खोलते नहीं. तो गूगल का काम इतना सा ही है कि आप बुक्स लेके घर आ जाओ. Correct. No. When I was talking about Google, actually it was sarcastic and there was pun intended. I know. So about and we are living in those times, so that the parimiti क्या होता है उसके बारे में बोलने के लिए, because जो philosophy बोलना था आपने, जैसे भाटे साहब बोलते रहते हैं, आपने बोल दिया. जो साइंटिफिक बोलना था ये नाटकर्णी साहब बोल दिए और बलराम सिंह जी बोल दिए, और हम क्या नया ले आए हैं हर एपिसोड. इसीलिए कुछ न कुछ तो दृष्टांत या एग्जाम्पल या स्टोरी, जैसे राधा जी ने लाया, आप ही की बात के मजे ले रहे हैं ना, आप ही की बात के. हाँ बिल्कुल करेक्ट. टू बिकॉज द होल थिंग इज अबाउट जिज्ञासु की दृष्टि से. ये ज्ञानी की दृष्टि से नहीं है. हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, तो आई थिंक इन दैट सेंस sometimes, and you are also, ये अभी कम नहीं है, you are also bringing some lighter side and to make it interesting and अच्छा है. Of course, yeah. Sir जी, एक ही छोटा सा point. Yeah, please go ahead, please. While I appreciate Darbha Saab's beautiful wit and sarcasm, I must put it on record that Google has a positive side which has enriched my life immensely. Yeah, definitely. There are so many people. There are so many people. Yeah, you are right. But that is engine, you see. That is engine itself. वो Google को क्या कहते हैं? सर्च engine है वो. कंपार्टमेंट आपको बनाना पड़ेगा. आपको अपना कंपार्टमेंट बनाना पड़ेगा. engine में तो कैसे आता है? बिल्कुल. Yeah. और किसी ढूंढते रह जाओगे. जी आचार्य जी. My answer is to Darbha Sahab that Sharma ji should be actually one of the panelists here, and हम लोगों को ना रोटेट करके एक बार एंकर बनना चाहिए. क्या बात है. I really appreciate because he has much knowledge, but he keeps quiet because he wants to give us a chance to talk. Absolutely. That's not right. That's not right. Absolutely. And I think we should sweep the anchor बनने का. That would be a wonderful idea and great idea. I really liked it. Yes. And sometimes I don't have that knowledge, and I do quite often I remain quiet कि मेरे को ज्यादा आता जाता नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभार ऐसा लगता है कि यहाँ मैं कुछ बोल सकता था, वो मैं मिस कर जाता हूँ. That's right. बट एनीवे, आप यदि ऐसा ये काम आप लोग रोटेशन में ले आते हैं तो इससे बढ़िया तो कोई बात नहीं हो सकती. I am in. क्या बात है. तो नेक्स्ट एपिसोड से आचार्य जी से शुरुआत कराएंगे. Yes. I will be the panelist and you will be the anchor. आप व्याख्यान कीजिए, मजा आ जाएगा. अरे नहीं, वो कोई बात नहीं. उसकी तो कोई बात ही मत करिए. वो इतना तो फिर हमारे व्यूअर्स को हाइप पे चढ़ा दोगे, मैं तो कोई फिर मेरे अंदर वो एक आ जाएगा कि क्या करें क्या नहीं करें, तो वो नहीं. बट आई विल ट्राई माय बेस्ट. गुड सजेशन. भाटे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? भाटे साहब प्लीज गो अहेड. मैं एक बोलूं एक लाइन? हाँ प्लीज बोलिए ना. हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था, जो आज राधा जी ने जो एक बात कही ना, तो उसमें थोड़ा सा, जैसे वेदांत में ना मुमुक्षुत्व एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मुमुक्षुत्व जो है ना वो एक इच्छा है, और इच्छा
कैसी इच्छा है, तो सांसारिकता से निवृत्त होने की इच्छा है। तो इसीलिए मुमुक्षुत्व तो एक इच्छा है, लेकिन वो इच्छा है कि संसार के प्रति जो राग है उससे निवृत्त होते हुए हम उस परम तत्व तक पहुंचे, वो इच्छा है। लेकिन अनुबंध चतुष्टय, ये जो साधन चतुष्टय का एक बहुत प्रमुख अंग है वो, तो उसको डिनाई करना कठिन है। तो मैं थोड़ा सोचा कि बीच में एक लाइन आना ठीक बात है जी। नाडकर्णी साहब कब नहीं, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक लाइन और की जो राधा जी से कि जो परमादरणीय स्वामी दयानंद जी का मैंने सारा लिटरेचर पढ़ा है और मैं बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन वो मैं जानता हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन मुमुक्षुत्व शब्द को डिनाई करना थोड़ा कठिन है, ये मैं कह रहा हूँ। No, it's not denying. It's not denying. What I'm saying is that I'm talking about the Triputi. That when we are asking for moksha, and then if we already have that oneness with Ishvara, then who is asking from whom? अगर आपका IQM हो गया है, I'm talking about the IQM. So once we already have the IQM, then who is going to ask for who? But before the IQM, yes, of course, साधना चतुष्टय से शुरू ही हो रहा है ना, जैसा। जिस स्थिति की आप बात कह रही हैं, जिस स्थिति की आप बात कह रही हैं, उस स्थिति में तो कुछ रह ही नहीं जाता, एक ही सब कुछ है, तो वहां तो So I am talking about IQM के बाद में, not before the IQM. IQM से पहले शुरू तो साधना चतुष्टय से ही होगा ना, तो वो तो हम जब तक उसको नहीं करेंगे, मुमुक्षुत्वम च एति के से खत्म होता है the sadhanas that we are talking about. But who is going to ask later after the IQM? क्योंकि IQM के बाद में तो त्रिपुटी है ही नहीं ना. I am talking about that. But yes, I think that's why बोला गया कि स्वस्वरूपानुसंधान, स्वस्वरूपानुसंधान, that's why it is. तो जो जानने वाला कौन है, जानने वाली चीज क्या है, जैसे आप बोल रहे हैं त्रिपुटी, ये ज्ञाता ज्ञान ज्ञान प्रमाता प्रमा, all these will dissolve, and then what you have to know is about स्वरूप अनुसंधान. I think that's how we have to. प्रोफेसर प्रहलाद सिंह साहब कुछ कहना चाहते हैं क्या? शर्मा साहब हाँ जी, नाडकर्णी साहब कुछ कह लीजिए 2 मिनट है, लेकिन हमारे पास छोटा सा पॉइंट है। हाँ, जो आचार्य जी ने कहा कि एंकरिंग का वो जो बात कर रही थी, तो द आइडियल जर्नलिस्ट इज ऑल्सो सपोज टू बी लाइक दैट यू प्रेजेंट द माइक टू योर सोर्स एंड यू गेट आउट ऑफ द वे। इन द सेंस हमारे प्रेजुडिस आपके बीच में मत आने नहीं चाहिए, और हमारी लिमिटेशंस जो हैं अंडरस्टैंडिंग के भी हो सकते हैं। Like now, if I see Jha Sahab in a particular way, now what a delight it is that he has done a PhD, on this. But then करा चुके हैं कईयों को, करा चुके हैं। अच्छा। Okay. But even so, ये इतना गहन और इतना विशाल सब्जेक्ट है, about probability, about determinism, about linearity, non-linearity, about consciousness, whether there is a critical mass after which consciousness operates, whether it is a meta phenomenon. There are so many aspects to it. But what I love about this discourse is that everybody is listening and exchanging and explicating, which is really, and somebody asked me about, why is it that India, quote unquote, is relatively doing well compared to the rest of the world? In say, when you look at China, for example, which is also a traditional society. I am reading a book by a master called Jeremy Lent right now, and he is talking about what he calls as the patterning instinct, where, and then Web of Life करके उनका दूसरा एक किताब है, very praises Taoism and Chinese philosophy. Nadkarni Sahab, time is out. Yeah, but then time is out. But then he's asked a question: how is it that they are having this crisis? That is where India comes in with its ethics and morals. Right. That is the strength of India. That is my brief submission.
गुड गुड गुड, ग्रेट पॉइंट यू मेड। या एंड ज्यादा इस मामले में ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। एंकर वैंकर वाला मामला, आचार्य राधा जी मुझे एक्सपोज करना चाहती हैं, मैं सब जानता हूँ। ज्यादा चक्कर मारने की जरूरत नहीं है जी। प्रोफेसर बलराम सिंह साहब, I think Professor Bhate is also. I think Professor Bhate also wants to say something, but I wanted to say, whatever is going on is wonderful. Obviously, I wish that you could have 7.5 billion people on your show, and that will be really the best way to understand this world. Because the world, the way we look at it, either you get into. We are talking about how the Einstein was looking into probability or not. Well, he didn't say he was looking for probability, but he did use something fixed which is not fixed, which is he's used arbitrarily speed of light. And so be familiar with it, especially coming from Indian perspective. Right. We should be aware of that. But the one just little point I wanted to make is that when you expand yourself in the Brahm, there is nothing is left in terms of to be known, but everything you are attached to. So you are at the infinity and zero at the same time, and that is a concept that Indians have had, even Buddhism has had. So I think we should even create. I mean, it's wonderful to read all these things, and I learned so much. Even though I'm a scientist, I don't know about much of the philosophical aspect of science. But we should read all that. But we should bring, this discussion to me is very useful, because then we can bring newer way of looking at the science, the data that we look at. थैंक यू। तो भाटे साहब कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से कह लीजिए। Yeah, I want to wrap up, and there is no time to discuss anything more. But the point of Balram Singh ji being at zero and at infinity, both together at the same time, is very, very well taken. All I want to do is to quote some references very briefly to wrap up. The first of all, there was a talk about Marga that Darbhaji explained. I just want to mention that there is a whole scripture called Garuda Purana, and in Garuda Purana you have detailed descriptions of these margas. So that is one reference that I wanted to give. Second reference, I think who mentioned, I don't remember, Darbhaji or Nadkarni ji mentioned about, no, Darbhaji, Plato. What Darbhaji was talking about was actually, there are two philosophies. One is Plato's philosophy, and there is another one which is called Neoplatonism. And what Darbhaji was referring to is already explained in Neoplatonism. So that is another second reference that I wanted to say. Right. Then third reference is that Sharmaji mentioned about the word, how the word knowledge came, and he said that the word knowledge came from the Sanskrit Vedic word jnanam. And so I'm putting a little commercial. I've already shown you this book, a couple of times. And if you see chapter 1 of my book, there is a complete description of how the word knowledge came from jnanam, and there is a whole chapter on that. So you can look at it. Sir, time is out. Time is out. Yeah, just so one small. Yes, I just wanted to quote some references. And that's it. Thank you. Next time और आपके लोग और दिखा देंगे जी। नाडकर्णी साहब बोल लीजिए। Tachyons. I want to use the word tachyons and ECG George Sudarshan. The speed of light has also been questioned and played with, and there are particles theoretically posited that travel faster than the speed of light, and they are called tachyons. And the work was done by an Indian scientist called George Sudarshan, who I had the great pleasure of interacting with personally also. Thank you. Right. तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम, आपने सुना। और आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रोफेसर रामनाथ जी झा, आचार्य राधा जी, विठल जी नाडकर्णी, प्रोफेसर बलराम सिंह जी, प्रोफेसर अनिल जी भाटे, प्रोफेसर श्रीराम जी दरभा। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम गीता उपनिषद जिज्ञासु की दृष्टि में। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।